lost in here. Suffering as Krishna's mercy. Suffering as Krishna's mercy. Okay. I got it. I know what happened. Okay. Now we can start. Thank you. I apologize. Hit it. Hare Krishna. Am I Haribol audible? Mata. Yes, I Yes, can Mata. hear you. Namayom Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namayom Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gaurabani Pracharine Nirvishesho Shunyavadi Pasyatto Deshatarine Namaste Saraswati Deve Gaurabani Pracharine Nirvishesho Shunyavadi Pasyatto Deshatarine Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayo Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Jai Kunja Bihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Jayo Prabhupada, 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 Jayo Srila Prabhupada, Jayo Jayo Prabhupada, 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 Jayo Srila Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Hare Krishna. Okay. Uh-oh. Sivas Adigoura Bhakta. Ay, Krishna. What happened here? Hold on. Hi. Okay. I got audio. Hare Krishna. Sorry. I don't know what happened there. Yes, okay. Here we go again. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamne Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachaline Nirvisesa Sunyavadi Paskacha Desatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Katadara Svasadi Gauravani. Thank you, all devotees that are here. Please pray and bless me so I can speak something beautiful to the heart, all the devotees, because the blessing of the devotees is what we're looking for. And that is the quickest way to attain devotional service. Right? We're doing the Hindi, right? Keshari? Should I translation now? Yes. Should I start? This Okay. Hare is Krishna. introduction to the class. Okay. Hare Krishna, please accept my humble obeisances. So this is here Keshavi Shubhangi Devi Dasa. So today we will do the class and I will do the translation in Hindi. So Prabhuji will speak in English. Okay. So let's start. तो प्रभु जी ने जो भी यहाँ पर बताया है, प्रभु जी चाह रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि हम सभी को भक्तों का आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सबसे मतलब फास्ट एक तरीका है इनमें आगे बढ़ने का। क्या प्रभु जी? So the devotees mercy, it comes by blessings, by prasadam from the devotees, like Narada Muni, he was eating the prasadam from the great sages. From the glances, the Lord cast his glances, like Lord Chaitanya, he was dancing, was casting glances, and devotees would be imbued with transcendental potency by being under the glance of Lord Chaitanya. प्रभु जी बता रहे कि भक्तों की जो कृपा है वो बहुत ही जरूरी है। जैसे ही भाई जो नारद मुनि है उनको जैसे वो प्रसादम खा रहे थे, तो प्रसादम जैसे पा रहे थे वो भक्तों का, तो उनपे भक्तों की कृपा हुई। वैसे ही
भगवान जो चैतन्य है वो भी हम पर एक उनकी कृपा दृष्टि से हम पर कृपा करते हैं। Yes, sir. And blessings also come from a knowledge of a senior devotee of the spiritual master that purifies our heart and makes us advance in devotional service by understanding those instructions and carrying out the instructions. तो जो हमें जो आशीर्वाद जो कृपा मिलती है वो उससे हमें ज्ञान भी मिलता है। और ये कैसे मिलता है, हमारा जो वरिष्ठ वैष्णव है, वरिष्ठ भक्त है, और हमारे जो गुरु जन होते हैं, उनसे हम ये ज्ञान के रूप में प्राप्त कर सकते हैं ये कृपा। और उससे हमें जो भी आदेश मिलता है उससे हम अगर हमारे जीवन में उतारते हैं, इंस्ट्रक्शन को समझते हैं, तो ये कृपा के रूप में हमें और सीखते हैं। Yes, sir. So we should always look for the blessing of the devotees and do not think I only get the blessings to those top devotees. All the little devotees, that blessings is no, small devotees, small blessings. We shouldn't think like that quantitatively, because the blessings of the devotees are unlimited. And it's not just to do with the one who's giving, but the one who is receiving also. Our attitude in receiving and their attitude in giving. So we're looking for both sides of the equation there, and we're looking for the devotees. And how to get the blessings of the devotees? We serve them. We serve them in different capacities. Revealing the mind, get the mind to reveal prasada gifts. Instructions. And in confidence like that. We attend to their association, and that is we get the blessing of the devotees. तो प्रभु जी बता रहे कि हमें हमेशा इस तलाश में रहना चाहिए कि हमें भक्तों की कृपा कैसे मिले। और हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अगर कोई वरिष्ठ भक्त है तो उनसे हमें बड़ी कृपा मिलेगी, अगर कोई छोटा भक्त है अभी नया नया इसका तो हमें बहुत मतलब छोटी कृपा मिलेगी। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। और कृपा तो कृपा ही होती है, वो हमेशा अनलिमिटेड होती है, जैसे प्रभु जी ने बताया है। उसका कोई तोल नहीं है, कृपा हमेशा मतलब बरसती रहती है। एंड ये दोनों तरफ से होना चाहिए, जैसे कोई कृपा देने वाला है और जो कृपा रिसीव कर रहा है, जिससे कृपा मिल रही है, तो दोनों तरफ से ये चीज होनी चाहिए। तो वो चीज और जो आशीर्वाद कृपा जो है वो और अच्छे से मिलेगी। और जो रिसीवर है, जो मतलब कृपा जो ले रहा है, उससे ऐसा होना चाहिए कि लाइक वो भी कुछ उन्हें सर्व कर रहा है, उन्हें कुछ और जो प्रसाद देना है, कुछ गिफ्ट देना, कुछ ऐसी चीजें उनके बीच में कुछ ऐसा एसोसिएशन। यस भाई। Because we may think that it is a lesser devotee, a bigger devotee, and I should get the mercy from this, the deity or whatever. But see, between two mercies, the one is giving, the one is receiving, in the middle, who is in the middle? Who is in the middle? कृष्णा। Exactly. Krishna, the Guru Parampara, Krishna, the power of the Guru. You see, they are in the middle. So Krishna is saying that, and he can make that mercy go right straight in the heart, even though come from a simple devotee. But just like Prabhupada said, we can get gold even from a not so clean place. Gold is gold. And sometimes a simple devotee will speak to us a very simple truth that goes straight to our heart and may change our heart a little bit, make us advance in devotional service. So the mercy can come anywhere. In relation to devotees, Krishna is in the middle, and he makes the fulfillment of the blessings, and the potence of the blessings goes to the person receiving. You see, because Krishna is between the inter-exchange between the devotees. Krishna is in the middle. तो प्रभु जी यहाँ पे ऐसे बता रहे कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कोई छोटा भक्त है या कोई वरिष्ठ भक्त है। कृपा तो कृपा ही होती है। और इसमें जो कृपा लेने वाला है और जो कृपा देने वाला है, इन दोनों के बीच में कोई होता है, और वो होते हैं कृष्ण स्वयं। तो जो कृष्ण होते हैं वो देखते हैं कि मतलब देने वाला कैसे है और कृपा लेने वाला भी कैसे है। और जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो सोना होता है, स्वर्ण होता है, वो स्वर्ण ही होता है, चाहे वो गंदी जगह पर हो या फिर स्वच्छ जगह पर हो। वैसे ही
हमें ये नहीं देखना है कि कृपा हमें कौन से भक्त से मिल रही, बड़े से मिल रही, छोटे से मिल रही, कृपा तो कृपा ही होती है। यस प्रभु जी। So you pay attention to the details of the social behavior amongst devotees. We call each other Prabhu, Mataji. Okay, but Mataji is more like to the women, but Prabhu, no, every devotee is a Prabhu in a sense. So you're calling him master. You see, you put yourself under that so you can get that mercy come from this Prabhu. Uh, the devotee is a instrument of the Lord to show us our advancement to ourselves. Sometimes we think, oh, I'm so advanced. And then the devotee come, why you bother me here? I have so important things to do, so much service. The service is right there. The devotee is approaching you. I have a saying I like to tell everybody, your problem is my service. You see, if somebody comes and that is a problem and that is a cry for help or a little desire for help from you, you see, that is, becomes your service. And Krishna is watching how you react to that. You're going to just go poo, 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 go to someone else, this is too much for me. Or you're going to go actually, going there and help the devotee with a particular problem. It could be a physical problem, where do I get the groceries in here? I mean, where do I get the electrician? Oh, I have a problem. This devotee, can you help me here? Or how do I think about these things and should be like that? We help the devotees with glad heart because by helping them, we actually, we're helping ourselves. We are the depository of Krishna's mercy. Krishna is seeing everything we're doing amongst the devotees. Right here, Krishna's here. He's seeing, oh, I'm speaking, you're hearing, he's right here. He's listening to our hearts, and, Krishna is there. He's watching the devotees, you see, and that is a kind of blessings that coming from the Supreme Lord, basing on our actions. तो मुझे यहाँ पे बताया था कि हमारे कुछ सामाजिक एक व्यवहार भी होता है, जैसे हमारे फॉर्म में, जैसे हम एक दूसरे को कह के पुकारते हैं, प्रभु जी है, माता जी है। तो ये एक अच्छा, एक हम डिवोटीज को ऐसे करके हम को हम पुकारते हैं। और जो भक्त होते हैं वो, प्रभु जी ने बताया, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं भगवान के, वो होते हैं। एंड ये नहीं देखना चाहिए कि तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे, मैं क्या करूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम है तो मेरे पास भी बहुत सारी सर्टिफिकेट, तो ऐसे नहीं करना चाहिए हमें। ऐसे ये बिहेवियर, ये हमें मानसिकता रखनी चाहिए कि ये अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही किसी भक्त को, तो मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, भले छोटी सी प्रॉब्लम हो, बड़ी प्रॉब्लम, जैसे प्रभु जी ने यहाँ पे बताया है कि किसी को कोई ग्रोसरी की जैसे की जाना जो सामान होता है उसकी प्रॉब्लम है, किसी को इलेक्ट्रिशियन की कोई दिक्कत आ रही है, कहीं पे कुछ आ रही है, तो उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो वो भी उन्हें मदद करनी चाहिए, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में। किसी को कोई फिजिकल हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ ऐसा हो गया, तो उसमें भी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे कृष्णा देखते हैं कि जिसको प्रॉब्लम है, जिसको दिक्कत है, और जो उसमें हेल्प कर रहा है, जो मदद कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है। तो कृष्ण इन सारी चीज़ों को देखते हैं और फिर उन पर कृपा देते हैं कृष्ण। यस सर। I say this a lot because I live in Mayapur, and so many people coming here. They come from different places, including from international place, and they transplanting here, and they don't know one thing about Mayapur, Bengal, a little bit about India. They're totally lost. And small things that we're doing here, like, get some prasadam or get things working the house, for their daily necessities. It's a big thing for them. You see, a simple thing like, who is electricity can fix this, and you're there to help, or the gas, who is the gas man. And once they get that, they become very, oh, thank you, Prabhuji. Wow, because they didn't even see how I'm going to do this, find a guy that's going to fix this. And in Mayapur, I always come immediately. I know my gas man, my electric man, my pipe man, all my men, I have lined up
because if you need, you know where to go, because that is what we're doing here, and we make note of that so we can also help other people with that. The voters that come first time. ओके, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि ये मैंने बहुत देखा है यहाँ पे। तो जैसे मैं मायापुर में देखता हूँ, कभी मायापुर में रहते तो वो देखते हैं कि मायापुर में जो अलग अलग जगह से लोग आके यहाँ पे रह के वो रहते हैं। कोई अलग जगह से आ रहा है, कोई अलग देश से आ रहा है, सब अलग अलग जगह से आते हैं, लेकिन उन्हें जरा सा भी आइडिया नहीं होता है कोई भी कि बंगाल के बारे में आइडिया नहीं, उन्हें भारत देश के बारे में भी थोड़ा भी आइडिया नहीं कि यहाँ पे उन्हें कैसे आके कैसे सब कुछ चीजें सेट करनी है नई नई। तो प्रभु जी लाइक कहते हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ डिवोटीज आते हैं, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं कि अभी उनके जैसे गैस का कैसे क्या इंतजाम किया जाएगा, कैसे इलेक्ट्रिशियन का इंतजाम, उनकी जो डेली नीड्स है उनके बारे में वो कैसे सेट करें, उन्हें आइडिया ही नहीं होता। बहुत दिक्कत होती है। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि ऐसे हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो प्रभु जी जैसे बोले कि मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे पता है कि मेरा जैसे पाइप फिक्स करने वाला जो कोई पर्सन है वो कौन है, इलेक्ट्रिशियन कौन है, प्रसादम कहाँ से सब चेक करना है, तो प्रभु जी को पता है, तो वो सब ऐसे करते हैं। प्रभु जी कह रहे हैं कि ऐसे हम दूसरों को भी हेल्प करते हैं। तो कृष्णा ऐसे देखते हैं कि हाँ ये सही तरीके से हेल्प कर रहे थे, तो कृष्णा कृपा कर। यस प्रभु। These are simple things, but it's a great source of blessings for the devotee to help, because it's easy for you to do. You hear, you know how to everything works, and devotee is very grateful. One time, this Mataji came here, and where do I get the connection with electricity? And I help the Mataji to get the connection. She has electricity now. She can put the heater, and the baby was protected, was warm, and she could cook and she could think all the things. Finally, she was ready. She can go in the temple and do her devotional service without thinking, oh, what happened back, in my house, how things going on in there. You see, so it is a great service. Okay. तो प्रभु जी बता रहे कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये हमें दिख रही है एकदम सिंपल, एकदम साधारण चीजें, लेकिन ये बहुत बड़ा चेंज लाती है, बहुत बड़ी सर्विस है। ये सारी चीजें हम जैसे करते हैं तो उनके जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है, और वो कृपा के रूप में हम पर आती है, बहुत बड़ी कृपा के रूप में, क्योंकि उनकी जो छोटी छोटी डेली की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। जैसे प्रभु ने बताया कि एक माता जी है, तो वो आए थे तो उनके वो ढूंढ रहे थे कि इलेक्ट्रिशियन का कहाँ से कुछ इंतजाम हो सकता है, तो उनकी जैसे प्रॉब्लम थी जैसे सॉल्व हुई, तो उन्होंने हीटर वगैरह फिक्स करवाया। जैसे उनका जो छोटा बेबी था, छोटा शिशु था, उसके लिए वो प्रसादम बना पाए, फिर उसके लिए जो नहाने का जो भी था हीटर होता है वो सब फिक्स कर पाए यहाँ पे। फिर वो दूसरे दिन जैसे तैयार होके फटाफट से मंदिर में गए और अपनी जो सर्विसेज करनी थी, जो भी सेवा करनी थी वो अच्छे से कर पाए। यस प्रभु। So, with that, we go moving a little bit in a theme of today, right? This sweet suffering as Krishna's mercy, the sweet taste of his arrangement. Okay, talking about suffering. Some people say, well, the devotees they talk about suffering. People they hide suffering. You see, like in America, somebody died, they come quickly, they take the body away. In the Middle East, they're in the hospital or the morgue. In India, they live there in the street for a while. So, the hide the stuff that it cause a little pain. It's like death, like disease, all these things. But we're not always harp in the suffering. We acknowledge suffering, because if you don't acknowledge suffering, then we're not living La La Land. You are living in La La Land, because you don't acknowledge something that's blatant in our face. Prabhuji, could you please explain what is the meaning of that La La Land? I couldn't got it. La La Land is like a fantasy world. La La Land, it's a fantasy world. That is sometimes expressed in movies, in theaters like that. So you would say some guy, he doesn't see the reality of a situation, is living in La La Land. Okay. All right. Thanks for asking. Okay. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि आज हम अभी इसमें बढ़ेंगे, जो आज की हमारी जो थीम है उसकी तरफ में, तो वो है कि कृष्ण की
जो कृष्ण हमें जो देते हैं, लाइक जो सफरिंग होती है उसका जैसे मधुर जो स्वाद होता है वैसे, तो हम जैसे देखते हैं कि जो बहुत सारे डिवोटी होती है उनके भी जो है डिवोटीज होते हैं उस सफरिंग को सामने लाते हैं, छिपाते नहीं, तो जो बाकी के लोग हैं उस चीजों को छिपाते हैं। जैसे अमेरिका का एग्जाम्पल बताया कि वो फिर सफरिंग जो होती है इससे भी पीड़ा से वो गुजरते हैं, तो उन चीज़ों को छुपाते हैं और फिर कहीं पे भी वो कुछ गीता करते हैं, जिससे उनको कुछ काम करते हैं, लाइक थोड़ा सा अच्छा है तो। तो हमें जब भी पीड़ा में हम होते हैं तो हमें मतलब उस चीज़ में हमें जो ज्ञान होता है वो हमें मदद करता है, तो हमें उसमें हार नहीं होती है। So if you analyze a little bit, you see that this material world is naturally a place of suffering. Okay, now we tend to forget because we're pursuing enjoyment, and that is drugs, there is alcohol, there is so many things, make you might think, oh, I'm enjoying now. But actually, everything we enjoy that you're not supposed to or enjoy too much, there's a price to it. And you pay a little earlier, you pay a little late, but you pay. You see, and you cannot avoid that because it's a natural law of this material world. If you have a positive life, you get positive result. If you have a negative, life with full negativities, you will have some negative results in health, in relationships, in all kinds of things. You see, your life won't be balanced. So this is what Krishna consciousness bring. It balances our life. First of all, you put yourself in the platform of human life, follow regulative principles, and then you change the holy name, you associate the devotees. That brings us to a point that we don't create any more bad reaction in our life, contamination in the mind, strange relationships. We become very protected. You see, and that is a step in the right direction. तो प्रभु जी बता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे हम देखते हैं कि ये जो भौतिक संसार है ये प्राकृतिक ऐसे ही बना है कि इसमें हमें पीड़ा ही मिली। हम यहाँ पे आते हैं, बहुत सारी चीज़ों का हम इंजॉय करते हैं, वो करते हैं। तो हम कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत ज़्यादा कुछ कर लेते हैं और कभी नहीं कम करते हैं, लेकिन कुछ तो हम करते हैं। तो इसका हमें जो भी भुगतान भरना पड़ता है वो हमें या तो पहले भरना पड़ता है या तो बाद में भरना पड़ता है, लेकिन भुगतान तो हमें यहाँ पे भरना पड़ेगा, उस चीज़ से हम यहाँ पे नहीं बच सकते। तो जैसे प्रभु ने बताया कि अगर हम कुछ भी हमारा का ऐसा कोई भी कर्म करेंगे जो सकारात्मक हो तो उसका रिजल्ट भी हमें सकारात्मक में पॉजिटिव में ही मिलेगा। और सेम इसका उल्टा, अगर हम कुछ भी ऐसा क्रिया करेंगे जो नेगेटिव है तो उसका हमें परिणाम भी उल्टा ही मिलेगा, सही नहीं मिलेगा। तो वैसे ही हमारे जो संबंध होते हैं उसमें भी होता है, सारी चीज़ों में वैसे ही हमें हमारा परिणाम मिलता है। तो ऐसे हमें चीज़ों को क्या करना है, मतलब बैलेंस करके चीज़ों को चलना है। और ऐसे ही हम जैसे कृष्ण भावनामृत में आते हैं, तो ऐसे हम हमारे यहाँ पे 4 नियम है, 4 एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल्स है, तो इसे हम सबसे पहले हमारे जीवन में उतारते हैं धीरे धीरे। फिर हम नाम जप करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम कोई ऐसा नया कर्म बंधन नहीं बांधते हैं जिससे हम और इसी में इस बंधन में यहीं पे पार्टी संस्थान में हम बंधे रहे। हम ऐसे प्रोटेक्ट मतलब एक प्रोटेक्शन शील्ड में आ जाते हैं एक कृष्ण भावनामृत में आके, और ये एक सही तरीका, एक सही स्टेप है एक कृष्ण भावनामृत में और एक आगे बढ़ने के। Yes, sir. So, Bhagavatamrta here, he's 70 years young. Okay? And I've been through some serious situations in the material world. That they call Hare Krishna, Hare situations. You see, and I can understand that material nature is relentless and it never stops. It's relentless and very no merciful. When material nature comes at you, she is not cruel, but she is very, I forgot the name, but relentless is one word that is incessant, won't stop, you see, and you keep at that
and it will be very strong in you. And that's the material energy. So we cannot be contempt in our devotional service. Contempt is not the word. See, it's more like be soft in our process of devotional service, because you hear from the experience in here. Just like you can go to a child and give some good advice because you have already some experience. Well, I'm giving something, not just what I went through, but something I see other devotees went through. You see, so the material nature, he doesn't think, oh, you're devotee. So for you, I'll be good. I'll be nice. This is what we think. And I have some of my friends that they lost somebody they loved, either because the person left or because he left the world, and they lost the faith in Krishna, thinking, I'm a devotee. Why these things happen to me? You see, why these things has happened to me? You see, the thing is, material energy is the position to bring you all kinds of things according to our karma. Now, I'm not saying, oh, I'm suffering, but everybody's suffering. But I'm not seeing. You see, nobody's coming, and walking the street. Nobody's telling the problem, but I know there's problems. I see they walk in the street. They're not like laughing. They have this, if you go in the cities, they have this weight in their shoulders. They worry. They worry about money, relationship, you see, and position, and financial situation, most of things, women, you see. So everybody has a little bit of how do you call, their feel in their problems. So the material energy is something that's not to be trusted. Like Bhaktivinoda said, do not trust the future, however pleasant. You see, do not trust the future. Okay? So we comes to understand then the material world is a place of suffering. Okay? If you're not suffering, good for us, because we can use that a little bit relaxed position from Maya to focus in our devotional service, to get strong. Because just like, it doesn't rain every day, but sometimes rain and sometimes there is hurricanes. Well, we prepare for both. You see, it doesn't hurricane every day, but when it comes, we should be prepared. Oh, hurricane, oh, I didn't know. No, now you know. You see, and we should prepare. Thank you. So can you please hold for 1 second? What is that? What? Can you please hold for 1 second? Just hold for 1 second, I'm coming. I hold, no problem. I can go speak a little bit, so no problem. This is a little bit for your sponsors, a little advertisement. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna. Hey, we should have advertisement, 5 minutes advertisement. No, actually, my mother was shouting on my brother, so it's so much chaos Really? outside. Good. Shout more. It's good. See, material energy is acting. Correcting. Live example. Yeah, it's okay. 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 So- प्रभु जी ने यहाँ पे बताया. Should I translate or you say more? Excuse me, say again. So should I translate now or you will continue? Did you finish the translation? What are you talking? Should I complete now first because You complete. Otherwise it will You go you long. complete? Not yet. Okay. You complete the translation we're doing? Okay. Okay. Yes. ओके तो प्रभु जी ने बताया यहाँ पे अपना ही एक एग्जांपल बताया कि वो जैसे यहाँ पे 70 साल के प्रभु जी हो गए हैं, तो उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखे हैं. तो ऐसे मतलब कहते हैं ना, कभी कभी इस भौतिक संसार में ऐसी बहुत क्रूर अवस्था मतलब जैसे आ जाती है कि इस चीज में, उसको पीड़ा में हम कुछ नहीं कर सकते हैं. और ऐसा बहुत सारे भक्तों के साथ में भी होता है. तो
बहुत सारे भक्त ऐसे देखते हैं कि अगर मैं भक्ति जीवन में हूँ, कृष्ण भावना में तो हूँ, तो फिर भी मेरे साथ ऐसी चीजें क्यों हो रही है। तो वो कभी कभी इन चीजों को, इस पीड़ा को नहीं झेल पाते हैं, और वो कृष्ण भावना का जो कर्म है इसे छोड़ छोड़ देते हैं, निकल जाते हैं इन सारी चीजों से। क्योंकि जो भौतिक संसार में जो ये जो माया है वो दिखती नहीं है कि आगे वाला जन्म में जिसे भी पीड़ा, मतलब जो रिएक्शन जिसको भी दे रहे हैं वो भक्त है या फिर अभक्त है, तो उसके कर्म के हिसाब से उसे उसका फल परिणाम मिलता ही है। तो जैसे हम जाते हैं कि सिटी वगैरह में हम जैसे देखते हैं कि बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, तो वो हमेशा हमेशा मतलब कि टेंशन में पीड़ा में ही दिखते हैं। कभी किसी के पास पैसों का टेंशन है, किसी के पास दिल का है, जो भी बहुत सारे टेंशन में, बहुत सारी पीड़ा में ही वो दिखता है। और वो जैसे उसके शोल्डर, जैसे उसके कंधों पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी जिम्मेदारी वो एक अलग पीड़ा के रूप में उसे दिखती है। एंड प्रभु, व्हाट यू वर टेल अबाउट टोल्ड अबाउट द भक्ति विनोद ठाकुर, How about it? about that, what Bhakti Vinod Thakur said about that One material person. energy. The material, yeah, that the person had a problem and blamed Krishna for it. He was not prepared to internalize, the loss of relationship, and then he decided that why Krishna did this to me. That's that's something I mean, in fear to come to a point that why Krishna is doing this to me, and blame Krishna for the things that is happening to my life. And I see sometimes my friends, they feel they blame Krishna, lead some friends, and they sometimes leave the movement or go away because they think they put the blame on Krishna, which is a not very resourceful way of thinking. So, but I was asking about the like what Srila Bhakti Vinod Thakur about said about this thing. Ah, Have you explained about that? I yeah. forgot about. Sorry. He said, uh, trust no future, however pleasant. You see, he said that, and he knew it. So we have to be in guard, just like I was saying about the rain, right? It doesn't rain every day, but it does rain sometimes. It doesn't have a hurricane all the time, but sometimes you do have a hurricane. So we should be ready for proportionally to these things that come to our life, and be able to withstand them, with proper what we call proper preparation. You see, and our preparation is our devotional service, our intelligence in studying this and understanding and assimilating in the heart what these things are for us. तो यस, यहाँ पे बताया कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमारे देव आचार्य है। उन्होंने बताया है कि वो हमेशा ऐसा कहते हैं कि फ्यूचर में हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। हम अभी जैसे ही चल रहे हैं, जैसे कि अभी अच्छा चल रहे हैं हम, अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो आगे भी हमेशा सब कुछ अच्छा ही चलेगा। तो इस तरीके से कभी भी भरोसा करके मत चलना, क्योंकि कभी भी जैसे एग्जाम्पल उदाहरण बताया प्रभु ने, जैसे कि जो वर्षा होती है वो ऐसा नहीं कि रोज ही होती है, वो आज है कल नहीं है, और आगे कभी हो सकती है। और वैसे जैसे तूफान वगैरह आता है, वो कभी आता है और कभी नहीं आता। तो इस उस चीज के लिए हमें हमेशा खुद को तैयार रखना चाहिए। और तैयार हम खुद को कैसे रख सकते हैं, हम खुद में सेवा करके खुद को तैयार करेंगे, और हमें पता रहेगा कि हाँ, अगर आगे की कुछ हालात आएंगे तो हमें किस तरीके से हमें खुद को बचा के रखें। यस सर। I was trying to find the word was ruthless and relentless. Material energy is ruthless and relentless, and it doesn't give a break, particularly for the devotee. You see, because the devotee mercy is different. Like with suffering in the material world, but if you don't know the science of the material world, then you are like in a boat without padding. You don't have, you have nowhere to go. Just the ocean is moving you around. You cannot have a direction. तो प्रभु जी बता रहे, जो ये जो भौतिक भौतिक काल में जो मटेरियल एनर्जी जो है, वो
बहुत तो रूथलेस मतलब वो बहुत क्रूर है, वो दिखती नहीं है, वो जब वो अपना परिणाम जब देने पे आती है, वो दिखती नहीं है कि आगे क्या है क्या नहीं, वो बस उसका परिणाम मतलब क्रूरता से में सब मतलब देते ही रहते हैं। और ये भक्तों के साथ तो होता ही है। और जैसे अगर तुम्हें ये चीज पता है कि हमें कैसे इस हालत को संभालना है तो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो फिर तुम उसमें जरूर, जैसे प्रभु ने यहाँ पे उदाहरण दिया है कि तुम एक जैसे एक समुद्र के बीच में हो और तुम्हारे पास नाव है और तुम्हें पता है कि चप्पू को कैसे चलाना है और कैसे हमें पार कैसे कैसे जाना है, तो वो नॉलेज तुम्हारे पास है तो तुम निकल जाओगे। अगर तुम्हें इस चीज का अगर ज्ञान नहीं है तो तुम वहीं पे घूमते रहो। कैसे? So the material world is certified as Dukkalaya Asasvatam. Dukkha is a place of misery and it's a temporary place. So that is, and our struggle is to avoid the dukkha, is to make asasvatam make permanent. We want to permanent our happiness, our life, and we're fighting the material energy, against the pains of the material energy. The whole material society is a society to avoid pain. So we don't have to walk, we can get car, we have incredible things of medicine. The problem is, without the knowledge of how the material world works, the so many solutions that bring in for this good life, it causes more stress and pain that we had it before. Just like you cover one hole, you have 10 holes now, ahead of you. तो गुरु ने बताया कि जैसे ये जो भौतिक संसार है ये दुख से भरा हुआ, दुखालय शाश्वत है। और ये जो संसार है यहाँ पे ये एक कुछ क्षण के लिए क्षणिक है, हमेशा के लिए नहीं रहता है। वैसे यहाँ पे दुख भी आते जाते रहते हैं। और यहाँ पे जो इंसान है वो चाहता है कि मैं सारी चीजें अपने लिए परमानेंट कर दूं, वो उसे सारी चीजें यहाँ पे परमानेंट चाहिए, जबकि जो संसार है वो भौतिक संसार जो है वो कुछ क्षणिक के लिए है, कुछ क्षण के लिए ही है। तो वो ये चीज नहीं देखता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है जा रही है तो उसे मैं कैसे हैंडल करूँ या फिर उसका ज्ञान कैसे लूँ, उसको नहीं जाए, वो चीज पे नहीं जाता है। वो सारी चीजें लेने में कि मैं एक गाड़ी खरीद लूँ, ये कर लूँ, इंजॉय कर लूँ, वो सारी चीजों में ही वो लगा हुआ रहता है, क्योंकि वो ये भी चीज नहीं देखना चाहता। उसके पास अगर जैसे प्रभु जी ने एक उदाहरण दिया है कि जैसे उसके सामने कुछ कुएं कह लो या फिर कुछ बड़े से छेद जो सांप के जैसे होते हैं वैसे ले लो, फिर अगर उसके सामने एक गड्ढा है तो वो उसको उस चीज को लेके टेंशन में रहता है, वो उसके वो ज्ञान नहीं पाना चाहता, उस चीज के पीछे दिमाग नहीं लगाना चाहता कि ये क्यों है यहाँ पे। अगर वो इस चीज के पीछे दिमाग लगाएगा तो उसके सामने और भी चीजें खुल जाएगी, तो वो उस चीज से बचना चाहता है। यस सर। We devotees of the Lord, we fight the suffering of the material energy, not by fighting with the material energy. We fight with knowledge, material, the suffering. We fight with knowledge. Because once you understand why you are in that position, you can start to work yourself out of that position because you have knowledge. But people that do not know that stays in that and keep suffering, and that's no good. यहाँ पे बता रहे कि हमें इस चीज के साथ में रहना है, इस चीज के साथ में मतलब रहना है, इस चीज के साथ में रहना है कि हमें इस हालात में हम क्यों हैं आज, इसके पीछे के ज्ञान को समझना, ना कि इसमें ही हमें मतलब चक्कर लगाते रहना। अगर हम एक बात समझ गए कि आज हम इस सिचुएशन में है तो हम क्यों है, क्यों इस पीड़ा हमें मिल रही है, तो हम इस चीज से हम बाहर निकल पाए। यस सर। Now, all of you have experienced, in your house, you bought a machine, a car, a washing machine, a radio, tape recorder, nowadays, anything, it comes with an instruction manual, right? How to deal with the machine. This button is for this button is for that, this, that. So we are in the material world, and the material world is what do you call it? It's a machine. No, it's a machine. What is the manual for this material world? For us to be
able to work this machine to our advantage. Where is the manual? Huh? Okay. So should I answer this? Bhagavad Gita? Well, first, you do the Hindi, and then let's see what everybody says. Okay, sorry. Okay, ओके तो प्रभु जी यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है हमारे हमारे जीवन में। जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं हमारे जीवन में, मशीन खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन है, टैप रिकॉर्डर खरीदते हैं। तो इन सब के साथ हमें एक तो मैनुअल मिलता है, लाइक एक तो लिस्ट ऑफ पेपर मिलता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि इन चीज़ों का हमें कैसे उपयोग करना है सही तरीके से। तो वैसे ही हमारा जो ये जो भौतिक संसार है ये भी एक मशीन की तरह है। तो हमें एक मैनुअल, एक लिस्ट ऑफ पेपर मिला हुआ है कि हमें इसे कैसे चलाना है। तो क्या कोई जानता है कि वो मैनुअल क्या है? वो अपना हैंड यूज कर सकता है, यूज कर सकता है अपने आप से। So where is the manual of this material world? Why even a washing machine has a manual, a car? Why the material world doesn't have a manual? Why? Who would create a material world in machine? Mama yantra durataya, no yantra durataya, a yantra. The material world is a yantra, it's a machine. Why does not have a manual? And what is the manual? और जैसे प्रभु जी पूछ रहे हैं कि ये जो भौतिक संसार है ये एक मशीन की तरह है, एक यंत्र की तरह है यहाँ पे। और वो यंत्र को कैसे चलाना है उसके पीछे एक लिस्ट ऑफ पेपर, एक मैनुअल मिलता है। तो वो मैनुअल कौन बनाता है? जो मशीन स्वयं बनाता है, उसे पता है। तो वैसे ये भौतिक संसार है, तो इस भौतिक संसार को किसने बनाया है और इसे जो चलाने वाले मैनुअल एक लिस्ट ऑफ पेपर है वो भी वो खुद ही चला बनाते हैं। तो क्या किसे पता है कि वो कौन बनाता है और ये कहाँ से आया? कहाँ से आया? कहाँ से आया बताओ। Manual Kotai for the Bengalis. Yes, Come you on. can unmute yourself. Huh? अनम्यूट करके Where's the आंसर करिए, manual? प्रभु जी आप सबको पूछ रहे हैं। Somebody runs who is Bishaka. It's the Bhagavad Gita, the Srimad Bhagavatam. It teaches us about this material world, how it's interrelated, the different energies, and ultimately how to get out of it. You see, it shows us that we are trapped in here and how to get out of this situation here. So maybe you should get to that Hindi part ओके ओके first. ओके। तो Yeah. प्रभु जी बता रहे हैं कि ये जो मैनुअल पार्ट है जो आ रहा है, तो विशाखा माता जी ने जैसे यहाँ पे आंसर बहुत सुंदर दिया है भगवत गीता। तो हाँ, भगवत गीता से ये सारे हमें जवाब मिलते हैं कि हमारे जो जीवन का जो मटीरियल वर्ल्ड का जो यंत्र है वो कैसे चलाना है। और उसमें बता दें कि हम जिस भी पीड़ा में है उसमें से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। जैसे So the suffering of a person in knowledge is different from the person that has no knowledge. The person who has no knowledge, suffering is pain. And pain out of ignorance, because we're suffering, we don't know why, even more painful. The devotee, however, he's suffering, he will meditate in his knowledge. You see the consequence of several actions. You understand, there's a karma, there is a different ways the material energy works, and you see how to get out of that. So our suffering will be used to advance in devotional service. We're going to have patience. We're going to have determination. We're going to, be more attent to understand our relationship with the Sri Guru and Gauranga, and we get out of that suffering position. You see, we get up by fighting with knowledge. But in the material world, people fight without knowledge. So what happened is they get out after some time, right? Time makes everything to forget, right? But what happened is you become bitter. You become atheist, bitter. He becomes rancor. Oh, this person, that person, this government, that government. You see, you just start complaining about everything without understanding, you see, why we're in the position
that sometimes we suffer, and everybody goes through this, you see. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि हमें जो पीड़ा होती है जिस भी पर्सन को, वो उस चीज को समझता है कि मैं इस पीड़ा में मैं कैसे क्यों हूँ और उसे कितना दर्द होता है। और एक एक वो पर्सन होता है जिसे इस पीड़ा में होता है, उसे ज्ञान है कि मुझे मैं इस पीड़ा में क्यों, और उसे ये सब कैसे पता चलता है जब वो ज्ञान नॉलेज को लेता है, ज्ञान जब उसके पास आता है तो वो एकदम उन सब चीज़ों के बारे में जानता है और उस चीज़ में से कैसे बाहर निकलना है वो उस चीज़ में लग जाता है। और उसे पता है कि ये मेरे कर्मों के ही परिणाम हैं। तो वो उन सब चीज़ों में लग जाता है कि अब इस चीज़ में से मुझे कैसे बाहर निकलना है। और धीरे धीरे हम जैसे ही भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारे अंदर पेशेंस आता है और डिटर्मिनेशन को कोई नहीं बता सकता है, नहीं पता है। और और उसे और अपना जो संबंध है भगवान के साथ, हमारे गुरु के साथ हमारा जो संबंध है वो उसे और गहरा करता जाता है, फिर धीरे धीरे भक्ति में और आगे बढ़ता है। और जैसे ही जो दूसरे तरीके के जो लोग हैं वो नहीं जानते हैं कि ये मैं इस पीड़ा में क्यों हूँ, इसका उन्हें ज्ञान नहीं होता है। और जब वो इस पेन के थ्रू जब वो निकलते हैं, इसमें जब होते हैं तो उसका परिणाम के रूप में वो क्या होते हैं, तो बहुत बिटर मतलब बहुत ही वो मतलब हार्ड लाइफ बन जाते हैं वो लोग। और कभी वो शराब पीने लग जाते हैं। वो ऐसे मतलब क्रूर जैसे वो लोग बन जाते हैं जब इस पीड़ा में से निकलते हैं। ये होता है जब उनके पास ज्ञान नहीं है। So when you're saying suffering as Krishna's mercy, the suffering is not the mercy. The mercy is the knowledge you have and the faith in Krishna that overcome the suffering. Krishna doesn't want a devotee to suffer. One time I was walking here in Mayapur, in the fields, and they have this dry, was the summer, they have this dry fields. They get ready to plant rice, and they have this wall made of this thorn, this very thick thorn. So the cows won't go inside like that. They have this. Sometimes a part of this gets in the little road that you travel. The boy in front of me is walking, right? And then he has these rubber sandals. And he went through a big thorn, went right through his foot, through the shoe and right through his foot. And he goes, no, Krishna, thank you, Krishna, for this, whatever. No, I disagree. No, it's okay. You can see that, you take like that, but Krishna doesn't want to make you suffer. Actually, when you suffer, Krishna also is suffering because Krishna has a soft heart for the devotees. But Krishna sees the suffering as necessary for understanding our position in this material world. You see, just like a kid going to the school, he's suffering. But the parents see, well, it's a suffering that is going to learn something and he's become a productive member of the society. It's good for him, you see. Or you give a medicine and it's bitter, and put a little sugar and you give, but he knows that that medicine is bitter, but it's good for the child. You see, so Krishna is not making us suffer. Never think like that. Krishna, our karma puts us in a position that we have some suffering come to our life naturally, not by the will of karma. At one point, you cannot avoid every arrows the karma sends you. No, we're not ninjas, bhakta ninjas, So sometimes we get some arrows, in some bad places, So we take that and we absorb the suffering, you understand that this is with knowledge, I overcome this. But never think that Krishna is putting us in a position and he's causing the suffering. He never do that. He's not causing that, maybe through his material energy, now that is being caused, but he's not personally causing that. It is our own selves that causing this because of different ways we act in the material world, in previous life, in this life, that we get in some trouble. And Krishna actually is in there to
minimize that to help us overcome that. Prabhupada said that some devotee, he had something, and then he said, well, yeah, Krishna, instead of getting his arm cut off, Krishna just go, just blowing it, just, like a boo-boo or something, instead of some heavy punishment. Krishna minimized the punishment, but you do get some punishment, you see, because, 100%, I don't think it's possible, and neither should be. We should go strong, you see. And so we minimize suffering by developing the intelligence to see where the suffering comes from, you see, and become steady and determined in our devotional service. And we become what we call tolerant for our situation. तो प्रभु जी यहाँ पे बता रहे कि हमें जो भी पीड़ा मिलती है वो हम देखते हैं कि वो हमें कृष्ण के कृपा के रूप में, वो इस चीज को हमें समझना है कि क्या कृष्ण हमें पीड़ा जो देते हैं क्या वो उनकी कृपा है, नहीं, ये उससे थोड़ा अलग। कृष्ण हमें पीड़ा नहीं देना चाहते हैं, वो हमें ये चीज में सिचुएशन में कभी कभी ऐसे हम डालते हैं ताकि हम इस पीड़ा में हम जो फंस गए हैं इससे हम बाहर निकले, बेहतर इंसान करके बाहर निकले। और प्रभु जी ने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे प्रभु जी एक बार मायापुर में कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक गली में से होके जा रहे तो रोड पर से ऐसे निकल रहे हैं और साइड में कुछ कोई लोग रहते थे, तो वो उसके पास रबड़ का एक चप्पल पहना हुआ था, तो वो चप्पल पहन के जैसे ही प्रभु जी की तरफ में बढ़ रहा था तो अचानक से एक कोई कांटा के ऐसा कुछ था तो उससे छूट गया, तो उसने जैसे ही उससे कांटा चुका तो उसने कहा कि ओ कृष्णा थैंक यू, मतलब भगवान कृष्ण को उसने शुक्रिया किया कि आपने मुझे दर्द दिया। लेकिन प्रभु जी ने कहा कि हाँ, कृष्णा को उस समय में याद करना अच्छा है, लेकिन ये चीज ये ऐसी नहीं है कि कृष्णा ने तुम्हें वो दर्द दिया है। कृष्णा हमें कभी दर्द नहीं देना चाहते हैं, पीड़ा नहीं देना चाहते। अगर किसी भी पीड़ा में हो तो कृष्ण को भी उस चीज का दर्द होगा, जिससे कृष्ण को भी पीड़ा होगी, क्योंकि कृष्ण हमारे सबके हृदय में है। जब कभी भी हमें दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो कृष्ण को भी दर्द पीड़ा होती है। और जैसे ही कृष्णा ये हमें सारी चीजें सिखाना चाहते हैं, और जैसे हमारे जो पिछले जन्म में हम पिछले जीवन में हम जो भी कर्म करके आए हैं उन सब चीजों का परिणाम हमें इस जीवन में मिलता है, ना कि कृष्ण हमें कोई पीड़ा देना चाहते हैं। हमारे कर्मों का परिणाम तो अभी हम इस जीवन में अगर कोई भी पीड़ा हम जो भुगत रहे हैं कोई चीज का के लिए, और इस चीज का हम अगर ज्ञान ले लेंगे कि हमें क्यों ये पीड़ा मिली है, क्यों ये हम भुगत रहे हैं, तो हम सही तरीके से आगे बढ़ेंगे और भगवान कृष्ण की तरफ हमारा जो संबंध है उसे और सही तरीके से आगे बढ़ाएंगे। और जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है हमारी पीड़ा हमें जो भी मिल रही है तो परिणाम के रूप में जो भी पीड़ा मिल रही है उसे वो कम कर देते, मतलब मिनिमाइज कर देते हैं, ना कि उसे बढ़ाते हैं। और जैसे कि एक और सुंदर उदाहरण बताया प्रभु जी ने कि जैसे कोई बच्चा बीमार है तो उसे हम दवाई देते हैं, तो दवाई देते हैं वो कड़वी तो लगती है लेकिन वो उसे ठीक कर देती है। वैसे ही पीड़ा भी हमें कभी कभी ऐसे कृष्ण की कृपा के रूप में हमें जो मिलती है वो हमें जैसे भौतिक संसार में से निकलने के लिए जो हमें जो पीड़ा बार बार होती है वो उसमें से बाहर निकालने के लिए हमें मिल सकते हैं। यस प्रभु। So the devotee in such a situation, he sees distress as Krishna personal attention. Krishna is paying personal attention to you. Some devotee asked Prabhupada, well, I'm a devotee, why am I suffering? Prabhupada said, well, because instead, in the act of devotion, you surrender to Krishna, all your karma is finished. And Prabhupada explained that it's like a fan. When you turn off the fan, the blade is still running. There is momentum there, you see? And then comes a full stop. So when we surrender to Krishna, we turn off that fan, but the blade is still running and there is some karma. There's some karma coming. So we take a little bit partial of the karma. We're supposed to take much more, and we take just a little bit. You see, enough to keep us straight and narrow path, in the straight and narrow, you see. And the devotee, it said here, the devotee accepts all kinds of tribulations as the mercy of the Lord. That's Srimad Bhagavatam, 10th canto, 14th chapter, 8th verse. Why Krishna allowed this is, just what we're discussing here. It purifies the heart. If everything's so good, we sit
and go to the comfort zone. Comfort zone is something we should be very careful with because it makes us, too comfortable in the little position and we don't advance more. Therefore, those who go and preach, they get out of the comfort zone. You gotta go out of the comfort zone to preach, to distribute a book, to go in a program, to do a Harinam Sankirtan, like that. You gotta get out of the comfort zone. So devotees, he gets tribulation, he purifies the heart, he detaches the devotee from the material world, and increase remembrance and dependence on the Lord. And I just finished with the quoting here. Krishna sometimes put his devotee difficult just to make him more determined in devotional service. You either go back and give up, or you go even and go forward with more determination. This is Srila Prabhupada's lecture, and he said that many times. Okay, that was a little long, but No problem. Yes, तो प्रभु जी ने यहाँ पे बताया कि अगर किसी भक्त को, किसी भी पर्सन को अगर वो पीड़ा में है, उस सिचुएशन में से होके, उस पीड़ा में से होके अगर वो चल रहा है, तो वो उसे कृष्ण का जो पर्सनल अटेंशन है, कृष्ण की जो कृपा है, वो उसे और ज्यादा मिलेगी, कृष्ण उसकी तरफ और दिखेगी, पर्सनल दिखेगी क्या होना है। तो श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि अगर मैं कृष्ण भावनामृत में हूँ, भक्ति में हूँ, तो भी मुझे इतनी पीड़ा, इतना ये सब क्यों मिलता है। तो प्रभुपाद ने बताया कि नेचर ऑफ डिवोशन जो बुक है, भक्ति रसामृत बुक, उसमें ये बताया गया है कि हमारे जो कर्म है उसे हमें फिनिश करना। तो हम जब कृष्ण की भक्ति करते हैं, भक्ति में जब आते हैं, तो हमारे जो भी पिछले कर्म है, जो भी चीजें जो हो रही है, हमारे कर्म के जो एक्शन जो भी करते हैं, वो सारी चीजें भी चल रही है, वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। जैसे प्रभु जी ने एग्जाम्पल बताया कि जैसे पंखा जो होता है, पंखे की जो अलग अलग 3 पत्तियां होती है, हम जैसे पंखे का स्विच ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो वो तुरंत एकदम झटके में से बंद नहीं हो जाता है, वो धीरे धीरे सर्कल होते 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 बंद होता है। वैसे ही हम भक्ति में जैसे जुड़ गए, हमने हमारे जो बाहर के जो कर्म है, जो वो हमने करना बंद कर दिया, क्योंकि हम भक्ति में जुड़ गए। लेकिन वो जो पंखा जैसे धीरे धीरे बंद होता है, वैसे हमारे जो कर्म है वो भी धीरे 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 ऐसे होने बंद होते हैं, कैसे बंद नहीं होता है, धीरे धीरे वो सारी चीजें स्टॉप करें। तो उस चीज को हमें समझना होता है। और जैसे प्रभु जी ने यहाँ पे आपको पे उदाहरण दिया है 10.14.8 पेज पे, तो उसमें से ये सवाल उठता है कि कृष्ण हमारी जीवन में ये सारी जो पीड़ा है उसे क्यों आने देते हैं, क्यों वो उसको अलाउ करते हैं, ताकि हमारे हृदय का शुद्धिकरण, हमारा शुद्धिकरण हो, और हम हमारे जीवन में जो एक कंफर्ट जोन में हम जहाँ से हम रह गए हैं, हम कभी आगे नहीं बढ़ते, उसमें से बाहर निकले। और जैसे एग्जाम्पल दिया है कि जो टीचर जो प्रचार करता है, वो कैसे जब बुक का डिस्ट्रीब्यूशन करने जाता है, प्रचार करने जाता है, तो वो अपने आप को उस कंफर्ट जोन में से बाहर निकालता है और भक्ति का प्रचार करता है आगे। और ये इससे डिटैच करता है, मतलब सारी चीजों से जहाँ पे वो अटक गया, उन सारी चीजों से उसे अलग करता है, कैच करता है धीरे धीरे करके। और ये भी, और ये चीजें कैसे होता है कि हम भगवान इस चीज में हम जब होते हैं, जब भगवान को हम ज्यादा याद करते हैं और हम पूरे डिपेंड हो जाते हैं कृष्णा पे कि हाँ, अब मैं कृष्णा के पूरे शेल्टर में हूँ, भगवान के ही कृपा में, कृपा ही मुझे सब मतलब बचा सकती है, पूरा डिपेंड हो जाता है इसमें को। और एक प्रभु जी ने जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे एक कोट दिया है, वो कोट ये है कि कृष्णा कभी कभी ऐसे एक सिचुएशन में हमें क्यों डालते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन में, ताकि हम भक्ति में, हमारी जो डिवोशनल सर्विस है, जो भक्ति में हमारी जो सेवा है, उसमें हम और ज्यादा डिटर्मिन हो और अच्छे से हम भक्ति करें। इसलिए हम लोग कभी कभी कृष्णा के सिचुएशन में ऐसी पीड़ा में डाल। यस। So, what is the devotee vision? Now we're almost there, okay? Hang in there. What is the devotee vision? Is gratitude even in difficulty. Gratitude even in difficult. Because if you do this, you buy the heart of the Lord. Because the Lord is soft, and you do something like that, you conquer his heart. The Lord is not cruel. You see you suffering. My devotee is suffering, so nice. No, he says a soft heart. Oh my God, my devotee. Oh my God, all myself. It's Krishna says, all myself. Not oh my God, all myself. That's a new one. So he said, look, my devotee is suffering. He's suffering the devotee. Right?
And and the body is thinking, I deserve much worse. But Krishna kindly is minimizing my suffering. Only this I'm suffering now. With this, you conquer the heart of the Lord. So there is a beautiful verse in the Bhagavatam. Tate nukampam su samiksa mano. Srimad Bhagavatam 10:14-8. One who patiently suffers, seeing it as Krishna's mercy, become eligible for liberation. You see how important? You just by become tolerant and seeing as Krishna's mercy, that's it. You're eligible. You're eligible. You got it. You see, you're liberated. It's right there. You see? So this is our position. But meanwhile, the materialist, he's saying, why this happened to me? Why? Devotee, how is Krishna teaching me through this? This is the devotee mentality. What is it that Krishna is trying to teach me in this situation that is some pain and suffering? But the materialistic is thinking, why did this happen to me? Like, why should it be bothered to have any tribulation? You see? Okay. I think we're done here. Yes, go ahead, Mata. Yes, sir. तो प्रभु जी यहाँ पे बता रहे हैं कि एक तो का जो एक विचार होता है, भक्तों की जो एक दृष्टि होती है इन सारी चीजों को देखने के लिए, वो कैसी होती है। भक्त इन सारी चीजों को जो पीड़ा है उसमें भगवान को फिर भी वो शुक्रिया अदा करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, भले वो कैसे भी पीड़ा में कैसे भी करते में हो, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान जो है वो क्रूअल नहीं है, वो क्रूर नहीं है। भगवान तो ये देखते हैं कि अगर मेरा भक्त अगर कोई भी पीड़ा में है तो भगवान देखते हैं कि उसकी पीड़ा मेरी थी, ना कि भगवान हंसते हैं, खुश होते हैं कि हाँ वो भक्त कोई पीड़ा में कभी खुश होते, भगवान कभी खुश नहीं होते, भगवान उनको भी इस चीज का दर्द होती, पीड़ा होती है। और जैसे ही वो भक्ति में और आगे दृढ़ रहता है इन सारी सत्संग में रहते हुए भी, तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उसकी जो भी पीड़ा, जो भी पनिशमेंट जो भी होती है, उन सारी चीजों को मिनिमाइज मतलब कम करते रहते हैं, इन सारी चीजों को धीरे धीरे करते हैं। और ऐसे ही जब वो इन सारी चीजों को सहन करता है और इन सारी चीजों का ज्ञान रखता है, तो वैसे भगवान का हृदय वो भक्त जो है वो जीते लेता है। और प्रभु जी ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है श्रीमद् भागवतम से 10.14.8 से, एक उसमें बताया है कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई भक्त इन सारी चीजों को, इस सारी पीड़ा में रहते हुए भी शांति से उस चीज को सहन कर लेता है, तो वो एलिजिबल मतलब उस लायक बन जाता है कि उसे मुक्ति मिल जाए, वो भक्त अच्छे से वो मतलब मुक्ति और अच्छे से कर पाएगा। तो उन सारी चीजों में से वो एक एलिजिबिलिटी मिल जाती है उससे। और जो दूसरे लोग हैं वो ऐसे सिचुएशन में फंसते, तो वो देखते हैं कि मैं इस पीड़ा में क्यों हूँ, वो मतलब ऐसे रिएक्शन देते हैं कि ये सारी चीजें मेरे साथ में क्यों हो रही है। लेकिन भक्ति जो है वो ये चीज देखते हैं कि अच्छा मैं इस पीड़ा में अभी आया हूँ, तो अभी इसमें से मुझे क्या टिफिन मिलेगी, क्या लेसन मिलेगी। तो वो भक्तों का एक ये दृष्टिकोण होता है कि उन डिफिकल्ट सिचुएशन में से भी वो चीजों को लेसन लेके सीखते हैं। यस प्रभु। So, finalizing, we get suffering in three different levels: adibodhika, adhyatmika, adidevika. From the demigods, karma, all these things. Adhyatmika, from other living entities. Adibodhika, adhyatmika, and from our own body and mind. You see, sometimes the pain in the body and mind, the body is like, you can take aspirin, or you can take care of that, but sometimes the mind, there's painful things going through the mind, and we have to be strong in the mind, because the mind can create monsters, you see, and we have to fight these monsters with the sword of Krishna consciousness, because in the mind, you're alone with your mind, and the mind can be very tricky and bring you to very different conclusions that it shouldn't be there. Okay, so we have to fight that with proper knowledge, and of course chanting and association, the holy Dham. And in the house we can have a little bit of a program we do for ourselves,
and chant like that. So we take care of that. So you go there, be careful, protect your mind, your intelligence, all the time, and chant. And then I leave you with this, very humble words from me. And I appreciate you all here. Thank you so much for being here. Okay. And anybody has a quick question? No. तो प्रभु जी यहाँ पे बताया कि हमें जो पीड़ा मिलती है भौतिक संसार में वो 3 तरीके से मिलती है, 3 रूप में, आधी भौतिक, आधी दैविक और आध्यात्मिक। और इसमें जो हमारा जो माइंड है, इससे कभी कभी हमारे हमारे मस्तिष्क के तरीके से भी हमें पीड़ा होती है, हमारे माइंड भी हमें पीड़ा देता है कभी कभी। तो उसमें क्या करना है, तो उस सिचुएशन में हमें अपने माइंड को, हमें अपने मन को स्ट्रांग बना के रखना है, क्योंकि जो दिमाग जो है वो बहुत ट्रिकी होता है। हमें कभी कभी वो अलग अलग परिणाम देता है हमें, मतलब ट्रिकी, मतलब हमें समझ नहीं देता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। तो हमें इन चीज़ों को समझना होगा कि माइंड के रूप में भी हमें कभी कभी पीड़ा मिलती है। तो ये इन चीज़ों से हमें निकलने के लिए कुछ तरीका बताया कि प्रभु जी ने, तो वो होता है हमें प्रॉपर नॉलेज लेना होता है, सही ज्ञान। और हम जो भगवान का नाम जप करते हैं हमें वो करते रहना है। और हम जो धाम यात्रा करते हैं, धाम का भी हमें एसोसिएशन संग लेना है। और जब हम घर में हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, कभी हाउस होल्ड प्रोग्राम जैसे प्रसादम वगैरह, कोई कथा वगैरह, ऐसा भी हमें करना चाहिए। और प्रभु जी ने कहा कि ऐसे ही हमें केयरफुल रहना, ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों का। और ऐसे हम प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड रखना है अपने मन को, बाय नॉलेज। यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज करें, या फिर अपना वो अपनी अनम्यूट कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल आज के सेशन से, या फिर आप कोई सवाल पूछ सकते हो। Anybody has a question, a quick question, then we're ready to wrap it up. We good now? We okay? Always narrow path, Hare Krishna. Yes. ऐश्वर्य माता जी सवाल ढूंढ रहे हैं। Who is giving question? Aishwarya Mataji is finding the question, like, yeah, her eye is going here and there. She is finding question in her mind. Yeah. Because all this talk about suffering is nice theoretically, but when it hit us personally, it destabilized a lot our life and our spiritual position. You see, yes, now we talk about this, it's nice, fun, but once we are, in the inside our problems and they're happening in our life, and that's when we need the strength to be very determined and very tolerant, very very patient, because everything passes, even our problems. Okay, everything, like sometimes there's cloud. Today, like Mayapur, 3 days there's cloud. Some I don't know why. I cannot even go out. My wife said, no, not even next door here. I cannot go. Stay there. Mm-hmm. She put all this juice, tea, all these things. Every 10 minutes she's putting some, I don't know, some black pepper with honey, in the tip of the tongue. So, okay, no problem. We tolerate. So, and this is the position. So then, thank you so much, you all. As you know,